Hello, 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 hello. Are we live now? All right, I guess we are live. Hello, 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 hello. ऑल राइट, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कंटिन्यूड लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे वी आर यू नो वी आर वर्किंग ऑन ट्रैकलिशियस, राइट? और ऑलराइट गाइस, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक और लाइव स्ट्रीम में। Today we are talking of we are basically doing a continued live stream of our Techlicious app. Yesterday हमने बहुत सारे आउटराउट्स बनाए थे, बहुत सारे क्या मैक्सिमम बना ही लिए थे, लॉगिन लॉग आउट और रिफ्रेश. All that is left is sign up, right? तो साइन अप का राउट बनाएंगे एंड देन विल क्रिएट दी साइन अप का कंट्रोलर बनाएंगे. साइन अप राउट के लिए कंट्रोलर बनाएंगे और उसके बाद हमारे पास सिर्फ यूजर रिलेटेड राउट्स बचेंगे, तो हम उन्हें बना देंगे. एंड दैट इज द गोल ऑफ टुडेज स्ट्रीम. ठीक है, लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ऑल्सो देयर इज दिस लिटिल वो there is this thing ऑल राइट. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट बिल्डिंग साइन अप. मैं ये क्या रिसर्च कर रहा था, आई लेट यू नो फॉर श्योर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड दिस, यू डोंट नीड दिस. साइन अप और लॉग आउट तो हो गया ना. Yes, you come here. First I'll tell you what I'm doing, and then you come. और क्रिएट यूजर का हमें बेसिकली वो करना है, राइट? तो SIGNUP.js async function sign up request response and module.exports. 2 dot exports. 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 2 dot exports
इक्वल्स टू साइन अप यहाँ पे, और यहाँ पे ऑन, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके साइन अप में उसे डाल देंगे। राइट, अब हमें साइन अप करना है। साइन अप में क्या होगा, बेसिकली विल क्रिएट यूजर का पूरा एक फॉर्म आएगा हमारे पास, राइट, और उसके बाद यूजर डिटेल्स आएंगे बेसिकली, एंड देन विल स्टोर इट इनटू आवर डैशबोर्ड डेटाबेस, सॉरी। राइट, so let's start without wasting any time. What do we need? User details model, user ID model, right? So let's go to login, user ID model. What's the other model was? User details model, right? These two models we are gonna use. Favorites model, I don't know. Okay, so username के साथ एक empty array डाला था, that makes no sense anymore because user का favorite अब हमारे पास उसमें ही है. Now we would need JWT, that is for sure. I'll tell you why. And you might have guessed right. Anyhow, now we are not gonna use pcrypt. For that only, I was doing research. I'll tell you, right? ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से request body से, correct? These are values, profile, picture, right? Now if इनमें से कुछ एक चीज भी नहीं है, और so what I'm gonna do is I'm gonna do a response dot send response dot status bad form वो and all and कैसे कर रहे थे भाई, लॉगिन में कैसे कर रहे थे, like this, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, करेक्ट। कूल, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, करेक्ट, कूल। ये सब हमें उससे मिलेगा। After we get all the details, now we'll do the try catch block here. Try, come on, yep, ठीक है। ट्राई कैच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूजर नेम डुप्लीकेट है या नहीं है, और डुप्लीकेट मेल चेक करेंगे। तो डुप्लीकेट यूजर नेम, डुप्लीकेट यूजर नेम, क्योंकि हमारे मॉडल्स में अगर हम जाएं यूजर डिटेल में, आई थिंक मैंने यूजर नेम को भी यूनिक दे रखा है
और ईमेल को भी यूनिक दे रखा है, राइट। तो what we are gonna do is const duplicate username, wait, user id मॉडल से ना उठा के rather यहाँ पे भी ट्रू ही है, ठीक है। चलो, I want to do it from user details, find one username dot link if duplicate username logger dot log. But this is not required anymore, right? You can just send return response 409 JSON message. Let me close this. Yeah, username exists response, right? User, let me just copy from here. Username already exists. Yeah. All right. Similarly, duplicate mail, user details model. I don't know why I am searching it in user ID model. यूजर आईडी मॉडल में थोड़ी ये होगा ईमेल, क्या क्या डाला यूजर नेम और पासवर्ड, दो ही चीज है, राइट। व्हाई आई एम इवन सर्चिंग इट इन हियर, दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज ब्रेकिंग, राइट। यूजर डिटेल्स मॉडल में हमने सर्च किया ईमेल, फिर डुप्लीकेट ईमेल, तो अगेन फोर्स, और यहाँ पे ईमेल, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिस्पॉन्स भेज करके, सिंपल इजी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, राइट। यहाँ तक क्लियर है अपन लोगों को सब। तो अब हमारे पास यूजर नेम भी यूनिक है और वो भी यूनिक है। mongoose find one, is it dot exact, it should not be, right? Anyhow, तो अब हम यहाँ आ गए, राइट। अब जब हमने चेक कर लिया कि सब कुछ सॉर्टेड है, तो हम एक हैश्ड पासवर्ड बनाएंगे यूजर के लिए। नाउ दिस इज वेयर my research which I was doing will come in play. So for that, let me use controller help logs, utils में जाके हम
एक पासवर्ड डॉट जेएस बनाते हैं, ठीक है। एंड क्या करेंगे हम इन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अनदर लाइब्रेरी we are gonna use in-house Node.js crypto module. How? Let's see. Const crypto is equals to require crypto, ठीक है। ये Node.js का मॉड्यूल है। Now we are gonna declare some constants. Let me just copy it. ठीक है, salt length, iterations, key length और digest। अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे हैश पासवर्ड करके, फंक्शन हैश पासवर्ड, और पासवर्ड उसमें डालेंगे तो यहाँ से हमें उसका वो मिल जाएगा, यू नो, आवर हैश पासवर्ड। अब उसे वेरीफाई भी करना होगा, फंक्शन वेरीफाई पासवर्ड। पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट होगा और स्टोर्ड हैश जो यूजर के डेटाबेस में हम बेसिकली अपने डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे। तो हैश इज इक्वल्स टू, सॉरी, and this basically compares both of them, ठीक है। इन दोनों मॉड्यूल्स को हम कर लेंगे एक्सपोर्ट, ऐसे कर देंगे हम सेव, ठीक है। अब यहाँ पे हम हैश पासवर्ड को इंपोर्ट करेंगे, const हैश पासवर्ड इज इक्वल्स टू हैश पासवर्ड, यप। और उसके बाद हैश पासवर्ड में हम वैल्यूज देंगे, क्या देंगे, हम देंगे यूजर का पासवर्ड जो उसने हमें भेजा है, करेक्ट। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। Alright, then we are creating these two objects for our database operation: user details object or user ID object, username, password, hash password, or ESM. Now we should be, you know, aware, be very cautious that all these things match. Username, let me do a split right, and then come to signup.js and do a control P. First name, last name, username, email, profile. Okay, the profile doesn't matter. Let's just do a profile here. Favorite should be an इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, डिफॉल्ट should be an empty array. Wow, preferences भी तो देनी होगी। Alright, let's do one thing. Let's ask our AI friends, right? For this, how to give to its empty array default value every time user detail object is created, and then how can I create some data in database using MongoDB.
above. Although we can find the solution here in the documentation. Like how are we doing it? E8 model dot E8. कलेक्शन का तो कोई नाम ही नहीं होगा ना. This is just a schema because and then default array यहाँ पे क्योंकि मैंने लिखा था. So सैंपल यूजर्स ये हो गए हमारे. Give me a second, guys. I'm getting a call.
Right. Excuse me for a second, guys.